So I think I'll try to do a brief introduction of everyone. Please forgive me if I mess it up. But then of course, you can edit more. Today we have Sania. She's an entrepreneur, fashion founder, and she's running this amazing brand called Cipher, where she's working towards sustainable products and serving the market where they're more conscious in their consumption. Then we have the amazing Pakiza Zaidi, who's an inspiration for all of us in the community. She's been around for a while, but then now she's heading one department at BNU for fashion design, and then one small department at Nishat as well, where she's overlooking their 3 brands, and then she does consultancy for other brands as well. Thank you so much, Pakiza, for coming in. And then last but not the least, Akib Hayat, who's known for his meticulous attention to detail in the pieces that he produces for high-end brands, couture, and bridal segment. But that's not the only thing that Akib does. I hope I didn't mess it up. Okay, so first of all, guys, I was thinking maybe we should start with a brief overview of what sustainability is, to just to bring the audience members to a common understanding of what sustainability is in fashion. So whoever wants to start first. Assalamu alaikum. I'm Sania and I run a sustainable fashion brand. It's one of its kind in Pakistan, and that makes me very proud that I've been someone that had the idea to finally do this, because it's very scary where people have so many options out there in the market when it comes to fashion, when it comes to representing yourself through clothing. Sustainability can mean a lot of things for a lot of people, but for me personally, for Cipher, sustainability just means to be more conscious, not just in what we produce, but also in how we treat our communities when it comes to fashion. Okay. I think in Pakistan, people who work in the fashion industry, sometimes the people that are working behind the scenes, they're not seen as much. Okay. So for me, it's also about not just producing clothing that can last longer, but also giving the right due to people who are helping you create them. Okay. So I think it's a mixture of all of these things for me. So yeah. Okay. I think everyone can hear me like this. Yeah. Yeah. So one has to understand that what exactly is sustainability. And sustainability is just not, it's not a term which we just look at and we say, is it sustainable or not? Sustainable is basically a lifestyle. And mostly people, because I'm in academia too, and generally भी जब हम किसी से भी बात करें, so people think that reuse करना, recycle कर देना या किसी को upcycle कर देना चीज़ को is called sustainability. Whereas sustainability is a lifestyle. Okay. The way we are right now being conscious enough to understand that हम healthy diet कर रहे हैं, organic diet कर रहे हैं, and we are talking about all those things because that awareness has come. Sustainability is also in terms of fashion when I look at, तो आपने, it is a complete product cycle. Okay. आपने एक end product की बात नहीं करनी कि pair of jeans की क्या sustainability है, T-shirt की क्या sustainability है. It is a complete cycle where it starts from the production, like the raw material, to the end consumer, and then after the consumer, disposable उसका क्या है, उसकी packaging क्या है. अगर आप एक बड़ा organic product बना भी लेते हैं, मगर आप उसको plastic में पैक करके racks पे ला रहे हैं, तो वो तो दफन हो गया ना idea sustainability का. Because आपको sustainability के अंदर you have to understand that it's a lifestyle. One has to become sustainable in a thought process. One has to be socially conscious, responsible that हम, और हम आज इसके aftermath देख रहे हैं. Pollution लाहौर की कभी आज से 10 साल पहले ये हाल नहीं था. आज से हमारी जो climate change हो रहा है लाहौर में इस वक्त जो सर्दी पड़ रही है जिस तरह की, so these were the things which were not there before, but now they are, and we have started facing the aftermath of all those things which we are contributing. And a lot of people don't know that textile industry की
आपकी जो waste है वो actually it is the second highest waste in the Okay. world, which is causing problems. And it is just not about कि पानी गंदा हो रहा है, it is about the carbon footprints. आपकी ozone layer खराब हो रही है, आपकी breathing problems आ रही हैं, आपको skin diseases हो रही हैं. People have to get first awareness. So before we go into fashion, I would like that people need to understand that it is about a lifestyle. And it is a mind frame, and one has to be conscious enough to understand that we are responsible for the birds. We have to be responsible about all the wildlife, the ecosystem God has made. We are destroying it. Okay. So that's one take on sustainability. And when we talk in terms of fashion, so people are, because globally if we talk about fashion, people are being aware of that. आप देखें बहुत सी अब तो हमारे पास buyers की request आती है and they ask that कितना sustainable process है आपके पास. आपने इसको बनाने में जो dyeing में कपड़ा पानी इस्तेमाल हो रहा है उसका आप क्या कर रहे हैं? Okay. All these things are coming in, but then again on a grassroots level in Pakistan, we are still struggling. Okay. And but दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि sustainability को अपनाने के लिए आपको सोच बदलना ज़रूरी है. And उस सोच के लिए आपको quantity over quality की बात होती है. ठीक है. Sustainability is all about quality. Quantity होती है fast fashion. जो कि पिछले 20 सालों में बहुत in fashion हो गया कि people like Primark has come up, जो कि disposable fashion भी जिसे हम कहते हैं. So now we have to go towards slow fashion. The world is going back to slow fashion. और unfortunately हम पाकिस्तान में subcontinent में हम बहुत sustainable थे. ये बिल्कुल वही बात है कि हम देसी घी खाते थे, बिल्कुल सही थे. फिर हमने डालडा खाना शुरू कर दिया या हमने वो चीज़ें खुद ही अपने आप को तबाही कर दी है. अब हम खुद ही gyms जा रहे हैं और अब हम we are reverting back because the world is going back कि organic होना चाहिए सब कुछ. So same goes here. हमारे पास सब कुछ होता था. हमारी textile जो थी यहाँ पर जो indigenous crafts हैं, जो indigenous हमारी textile है, वो सारी sustainable थी. बिल्कुल सही. ऐसे. I'll come back to this definitely in the middle because Pakistani Desi style is something that we've been talking about. Please, Akib, I would love to hear your thoughts on this. So basically, I'll have another look at it. I mean, like both of you said, कि एक तो सबसे पहली बात थी कि sustainability goes beyond the perspective of just creating clothes and just making something which is sustainable. I think सबसे पहले while working in the market, the one thing that I noticed was कि मतलब the people labor that we how like we manipulate them. और जिस तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं. I mean, there is a very regular example कि when you are sitting in a certain posture, जो हमारे अड्डे के काम की labor है, when they are sitting in a certain posture, they are not able to like get cross the bracket of the age of 50 without getting some kidney issue or something like that. And then just imagine like sitting in a certain posture for like एक कारीगर है उसकी दिहाड़ी होती है 16 घंटे per day. This is how he earns 2K per day. And even I mean एक तो ये चीज़ आ गई. फिर इसके बाद जो मुझे लगता है I think कि जो like Pakiza said, I would like to add कि we really need to understand and like inculcate this idea of basically मुझे लगता है कि जब भी sustainability ऐसे ideas यहाँ पे आते हैं तो they are like branded and they are capitalized by जिस तरह I mean let's suppose organic farming. Where is it going? It is like limited to certain elites. मतलब you cannot take it in the context of like masses. So basically I think we have to decontextualize how we see sustainability, and then we have to reinterpret. Only not in terms of I mean I understand that money runs everything, but still like when it comes to sustainability, like like I mean I would not take Western as an example because they are like many years ahead of us. So what I would like to take an example is like India ki case studies. When I was seeing at it, so there was this initiative known as Circular Design Challenge, in which like the major idea is to promote the materials and keep using them till the time they are no more. I mean जिस तरह से if we take our culture or heritage as an example, if you look at our crafts, relief for example, how was this made?
by the fabrics that were reused, and then putting them together, sewing them in the most finest way. And even if we look as an investor or like something financial way, see, it still sells, and it sells for very good money. Even the crafts of Balochistan. Even I would like to take this as an example कि अगर आप बड़ी छोटी सी बात है गौर करें, एक कट पीस की हमारी तरफ रवायत होती थी. People, there was, you know, this example, very beautiful thing where mother used to go buy the clothes, the remnants of the other clothes from the market, and they would come up, stitch the pieces at houses, doll up their girls. And you know, this was a very sustainable idea, I would say. बिल्कुल. जी. Yes. And if I add to that, I think we also have this tradition where, you know, when winter comes, we take out our quills, हमारी रज़ाइयाँ जो हैं, we take out that cotton, we refine them, and then we refill them. So yes, maybe, you know, if we connect it to that, you know, traditional practices of our region, we've been very, you know, responsible in terms of utilizing our resources. Wasif, when we talk about sustainability, as I said before, that it is just not about clothing. Mike. Acha. It is just not about clothing. As Akib said, that it is about the complete cycle. It is about the labor who's working. And I will give you examples. हम अगर इसको correlate करें with coal miners के साथ. Okay. So they have diseases. In the same way, आपको अंडरस्टैंड करना है कि मैं जो पहन रही हूँ उसके लिए कॉन्शियसनेस की बहुत ज़रूरत है. Okay. हमारे यहाँ पर जिसे हम अब जेन जी कहते हैं और द न्यूअर जनरेशन, दे आर ऑफ अ डिफरेंट टेंजेंट. और कुछ चीज़ों ने पिछले 5 सालों में कोविड ने भी कोई चीज़ें बहुत रैपिड कर दी हैं हमारे लिए. सो दे लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर माई सेल्फ दैट मैं कभी ऑनलाइन बाइंग नहीं करती थी. कभी भी नहीं सोचा था कि मैं, क्योंकि हमें अभी तक प्रॉब्लम है कि वी हैव टू फील द फैब्रिक और वी हैव टू सी द थिंग. But somehow the other, my children who are Gen Z now, you can say, so they are the ones who will be like, why are you even going, you know, you can even order online. So I say that mind frame. So these are, we have to understand that maybe Sanya is a younger generation, and when we talk about sustainability, we need to culminate the idea that you have to be responsible. हम बहुत ना selfish भी हो गए हैं. जैसे ही हम बात करते हैं तो it's all about me. मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं सही हूँ. ये sustainability के लिए ना, to understand the essence of sustainability, you have to understand the mind frame. You have to change it. Okay. And उस changing के लिए ज़रूरी है कि जो मैंने pair of jeans पहनी हुई है ना, अब this boy is sitting there who's wearing a pair of jeans. Sorry, I'm not targeting you, but I'm just giving you example. Nobody would understand that how much wastage has been done to this. To make one pair of jeans for you, and we have at least 3-4 in our closet, 10,000 liter of water is used. Whoa. And when that liter of water is filled with chemicals, because we are doing a dyeing process, and that water is thrown into the nalas, and we think के नाले को तो नहीं क्या होगा, वो actually दरिया में जाता है और दरिया के बाद वो समुंदर में गिरता है. So those chemicals actually kill your marine life completely. And आपका सारा ecosystem जो खुदा ने बनाया है, आप उसको खराब कर देते हैं. और जिनकी वजह से, जिसे हमने दरख्त काट दिए तो बारिश नहीं हो रही है. It's the same phenomena that when you interrupt anything which is a natural process, so you start actually spoiling the ecosystem or the cycle. And in the same way, when we talk about, if I say that yes, do buy a pair of jeans, but be conscious that suppose industry की जब हम बात करते हैं, I can talk about that aspect. वहाँ पर water filtration plants हैं. So there are certain, मगर हमारी unfortunately इतनी policy making इतनी hard and fast नहीं है, where people are going and checking के whether is it being used or is it just for the namesake that ये लगा हुआ है हमारे पास plant. So आपकी जिस तरह, I know that at Nishat we have these huge ETA plants उनको कहते हैं, जिसमें केमिकल को आपको ख़त्म करना होता है, बैक्टीरिया डलता है, केमिकल ख़त्म हो जाता है, and then that waste water has been thrown out. So आप कहीं ना कहीं contribute कर रहे हैं. But हमारे यहाँ पर जो हम पाकिस्तान की major
ये मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रही हूँ. बट जब हम मेन स्ट्रीम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, एवरी डे वी वांट टू लुक डिफरेंट. ठीक है. ये एक बहुत प्रॉब्लम हो गई है. तो जिसकी वजह से कैसे डिफरेंट लगना है, शक्ल तो वही है हमारी, और कोई हम चेंज भी नहीं हो जाएंगे. सो टुमारो व्हेन आई वांट टू लुक डिफरेंट, सो आई हैव टू हैव अ न्यू वार्डरोब. And for a new wardrobe, I mean to have new garments completely. And जो किसी ने ना देखे हुए हों. अब उसको करने के लिए होता ये है कि आप जाके प्राइम मार्क टाइप जगहों से, या आप जो फास्ट फैशन की हैं, आप देख लें कि जो ज़ारा है, ज़ारा ब्रांड वी ऑल familiar with, takes out 17 collections every year. And 17 collections के अलावा small flash collections निकालते हैं. H&M and all these brands, because आपकी, क्योंकि वो उनकी target audience younger generation है. So उनको cater करने के लिए, because everyone wants to become an influencer, everyone wants to be popular, and ये जो सारा एक, you know, it's also an ecosystem here running complete, where everyone wants something or the other. So उसके अंदर करते करते तो industry is catering, everything comes back to economics, as he said. ठीक है. हमें पैसा बनाना है, मगर पैसा किसके ऊपर बनाना है, पहले ये सोचना ज़रूरी है. ये लम्हाए फ़िक्रिया है हम सबके लिए. Okay. Thank you so much, guys, for giving us this understanding of sustainability. So if I do a quick recap, so sustainability is not just, you know, a word or a buzzword, but it's, you know, more like a lifestyle. Then, you know, we are responsible for the ecosystem, the bigger supply chain, and then, as Akib also said, I would like to add a thing over here. I think, you know, like she was saying, I mean, it goes beyond the idea, and you know, it's a whole lifestyle. I think in the example, I guess, lies down within our country. Well, I have been working with Sana Safina, so I think the one thing that I've majorly realized was the change and the trends that is so different in Lahore and Karachi. Like, I mean, in Karachi, it's more about heritage, it's more about the craftsmanship, and while in Punjab, in Lahore, we have this idea of making clothes, you know, which is more sellable, more loud, more celebratory, and or maybe, I mean, Asan al-Faz mein batana ke we have to show us how much money do we have. Okay. So I mean, when it comes to Karachi, those, I mean, even citing an example from India, Asif Sheikh is a designer from India, who makes very, you know, he has revived the old embroideries and embellishments. And, you know, like, he's selling for so crazy prices. Like, I mean, to buy a wedding sari, you have to spend more than 1 Indian crore rupees. And you have to place an order like 3 years before that. But he has such good practices, I mean, where even jo khaki ki tracing paper istemal karte hain, that has been revived all back to the times of Mughal emperors. And they are making the tracing paper exactly with the same technique of using the cow fat. और cow fat को आराम से बनाते हैं. और even, but then what I liked was it like they said, it is not only the thing कि they are only making the papers and they are only using the rubies and zircons in the embellishments. It's they have a proper system कि इतने घंटों से इतने घंटे लेबर काम करेगी. 40 years पे हम उन्हें retirement दे देंगे. उनके बच्चों के लिए वहाँ पे school बनाया हुआ है. So I mean they are implementing it in a way. And I mean, Asif Sheikh is only one of the few designers in the world who goes to White House to take the orders. Okay. Sorry, I'm just taking a little bit. No, please. That is, it's just not being organic. Okay. Sustainable has nothing to do with that only. Okay. Yes, it is a major part that you have to have organic dyes or vegetable dyes, जिनको हम कहते हैं, या organic cotton जिसपे fertilizers या pesticides नहीं डले हुए होते. आपका जो एक सिस्टम है, कुछ रियलिटीज़ हैं which we need to accept. Nylon is there, plastic is there, but what we are going to do? So अब आपके पास, हमारे पास, we are making polyester out of recycled bottles. जितने भी ये समुंदर में ये प्लास्टिक की bottles आपको जो हम फेंक देते हैं, वो दोबारा जमा होती हैं, उनको दोबारा shred करके melt करके उसका fiber बन जाता है. So that is also sustainability because you are reusing it. Okay. And in the same way, आपके जो discard होते हैं कपड़े landfill में जो जाते हैं, उसमें से जो कई कपड़े हुए हैं, वो आपको वो वापस आपको shred करके वो दोबारा उसका cotton yarn बन जाता है. Okay. So it's not only that we have to go organic. It means sustainability also means that you are reusing the product. You are adding value and you're using the raw material once again, or you're creating the raw material again. So there's a brand in America where what they do is that you buy from them, and when you want to discard your clothes, you go back to them. You give it to them, they will buy it off you.
and they will shred it again and they will remake it. In the same way, and there's another brand and Business of Fashion, एक magazine है और एक portal है कह लें, उसने बता दिया कि you can even trace back कि मैंने जो jeans पहनी हुई है इसकी कॉटन किस किसान से पाकिस्तान में असलम से या असद से ली है जी, और इस पे कितने पेस्टिसाइड डले हुए हैं, इस पे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड. पीपल आर अवेयर. It's just this in Pakistan we also need to be aware that we need to, as I said earlier, prefer quality, that we have to have durable and we need to come up with, and सबसे बड़ी बात we need to have ownership. हमारी जो एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि हम ओनरशिप ही नहीं लेते, even our textiles की भी, even our clothing की भी. So we want to change, and as he said that we want to be flamboyant and we want to show that we are all that. So one needs to understand it doesn't come from clothing only. Okay. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So you've already given me some case studies. I was going to ask you about that, but now I have a follow-up question because आपने भी ये बात की कि हर कोई नए कपड़े पहनना चाहता है. We have one face, but we want to change our personality when we're going out. So that sort of creates the demand. That makes me think about कि शायद buyer का भी कोई role है इस चीज़ के अंदर, because it's not just the major brands or a niche brand, but then if the demand is constantly there for fast fashion or for shiny or blingy clothes, then people will produce that. But if if buyers are more conscious or buyers are more responsible in their consumption, maybe then things could be changed. What are your thoughts on that as niche brands and as major brands? I think जब हम कहते हैं कि बायर भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर, और ये मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगी बिकॉज अदरवाइज ना बहुत प्रीची साउंड करता है जब आप कहते हैं कि अच्छा मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो इट्स सच अ बिग कॉन्सेप्ट कि हम उसको किसी एक चीज़ में कन्फाइन नहीं कर सकते. सो जब कहते हैं बायर रिस्पॉन्सिबल है तो आप रैक में डाल क्या रहे हैं ऑल्सो इफ द बायर इज कमिंग टू यू फॉर एग्जाम्पल. तो अगर हमारा एक वो परसेप्शन बन गई है ना कि जिस तरह मेरे साथ क्या होता है एज अ बिजनेस ओनर, पीपल वुड मैसेज मी कि उनको आउटफिट्स चाहिए फॉर फ्री. सो दे वुड टेक्स्ट यू, दे वुड से कि हमने फलाने इवेंट पे पहनना है और हमें आउटफिट चाहिए तो आप भेज देंगी. और मैं ये होती हूँ कि मतलब क्या, वाई एंड वाई आई डोंट प्रमोट दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज के इन्फ्लुएंसर्स जो है ना उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं. सो जब हम देखते हैं कि ओ ये फलाने इवेंट पे गई थी, इसने नया आउटफिट पहना हुआ है, तो वो जाके जिद करेगी घर जाके अम्मी से कि अम्मी मुझे भी नया जोड़ा दिलाएं क्योंकि उसने नया पहना हुआ था फलाने की शादी में. बिल्कुल ठीक है. सो वही आप कहते हैं ना कि हमारा एक ज़माने में ये माइंडसेट होता था कि जब कपड़ा बनता था तो बचे हुए कपड़े से अम्मी बच्ची का सूट बना देती थी. बिल्कुल ऐसे. सो अब जो है वो आपके कंज्यूमर जो आपका बायर है उसको फीड ये कराया जा रहा है कि उसको नया जोड़ा चाहिए फॉर एवरी इवेंट. सो नाउ व्हेन यू गो टू द मार्केट तो आपको फिर जो उस बेचारे की जेब के हिसाब से होगा वो वही दिलाएगा. और यूजली जो चीज़ चीप होती है वो चीपली मेड भी होती है और बगैर रिसर्च के और बगैर कॉन्शियसनेस के ही बनाई गई होती है. ठीक है. सो इट्स आई थिंक इट्स अ सर्कल. किसी एक पे ब्लेम डालना है, किसी एक के ऊपर वो करना कि हाँ बायर की ही सिर्फ गलती है कि वो जाके ऐसी चीज़ खरीद रहा है जो मे बी नहीं सस्टेनेबल है. सो it's a mindset that what you're talking about. दूसरी बात जो है ना, मैं डिफ़र करूँगी एक जगह पर. एक चीज़ अच्छी भी हुई है, प्री लव्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. जो प्री लव्ड यूज्ड है और ये बहुत ओके है. अब की जनरेशन देख रही है. ठीक है. एंड इट इज़ ओके. सो आप दैट इज़ एग्जैक्टली एंड कम्स अंडर द कैप्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. यू आर रीयूजिंग इट. ओके. आज से शायद कुछ साल पहले हम कह लें लंडा बाज़ार जो होता था उससे हम लोग नहीं लेते थे. बट नाउ यू ओपन अप योर इंस्टा एंड यू विल हैव zillion accounts of pre-loved stuff. Yeah. Okay. Thrift, yeah. So there's so many things happening that why do you have to buy it, और कोई वो वक्त दूर नहीं है जब यहाँ पर हमारे I'm sorry to say but bridals भी हम किराए पे लेना शुरू कर देंगे. Already a practice and people are doing that. Yeah, and as far as buyer की तुम बात कर रहे थे कि buyer क्यों लेता है, इसलिए बना रहे हैं. It's all what you call it, economics. Everything ends on economics. Okay. आज organic farming हो रही है ना, because buyer है.
इसी तरह ही आपके पास ये बन रहे हैं बिकॉज आपने फिर माइंडसेट चेंज करना है ना, ठीक है। और वो खाली एक चीज़ से नहीं होती, वो एकेडेमिया से भी शुरू होती है, वे यू टेल देम दैट, एंड इट इज़ नॉट कि भाई आपने फैशन के बारे में बताना है, यू हैव टू टेल देम दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन or you are responsible and you have to care about the other human and the any other living thing. So when you And the environment as well. Yeah, so it comes from grassroots level, from education. Okay. So you teach your child from at home, at your academia में आप उसको कराएं और वो प्रैक्टिस बन जाए, उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाए कि मेरी जो भी चीज़ होगी उससे उस प्रोसेस से किसी और को कुछ दुख ना पहुंचे. बिल्कुल ठीक है. So it's the same thing what हमारी मैं अक्सर कहती हूँ कि जब से overdose of things हुआ है ना, न्यूज़ हमें इतनी आने लगती है, जब तक 100 बंदा मर जाए हम कहते हैं 100 ही मरा था, आज से कुछ साल पहले या हम कुछ अरसे पहले बात करें, पीटीवी पे जब 9 बजे का खबरनामा आता था, वो एक लिमिटेड न्यूज़ एक आती थी, उसमें कहीं कुछ हो जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी. ठीक है. क्योंकि वो हर पल की रिपोर्ट हो रही है, दैट वी हैव बिकम सो इम्यून दैट इट डजंट रियली मैटर. सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एजुकेट दैट आपने इनह्यूमेन नहीं हो जाना है सारे प्रोसेस में, या नम नहीं हो जाना, यू हैव टू हैव योर कॉन्शियस लाइफ. ओके, ठीक है. I think I've spoken a lot. All good things, I would say. So Aqib, how are the buyers in high I end? would say that trends have a lot to do with all of that. I mean, since how things have become so Instagrammable and photographable with time, that's the reality, and we cannot deny that. I mean, as much as of a craft person, and like I am an old school person who loves heritage and craft, but since whatever I make, I've made in the industry has to sell. मतलब जब भी मैंने I was at Faraz, I was at Elan, Safuse and Sana Safinas, तो हर जगह पे चैलेंज ही यही होता था कि वो बनाना है, सबसे पहले किसका डिज़ाइन आउट ऑफ स्टॉक होगा. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इवन अमंग ऑल ऑफ दोज हेड्स, this was always we were so competitive all the time that we have to make. Even I mean, I remember कि even Elan per Safuse plan we would have a stock of 1,000 to 2,000 per design, और जब उसमें भी every stock would go out in 3 minutes. बट इवन इन 3 मिनट्स में भी ना, जो हम 2 डिज़ाइनर्स जो म्यूचुअली कलेक्शन पे काम कर रहे होते थे, हमें तक किसका डिज़ाइन पहले 10 सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हुआ है. आई मीन, सो लाइक, हालांकि माई डिज़ाइंस और द वे आई वर्क, इट वाज वी वांटेड टू ऐड सम काइंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट और कैरेक्टर टू द डिज़ाइनर प्लेस और however the way it was working. लेकिन फिर भी still, I mean, लेकिन I think the Pakiza, the point she has highlighted is very nice कि जब आप अपने लोगों को educate करेंगे तभी उनके trends भी redefine होंगे. उनके, I mean, you see the YouTubers, you see content makers, you see TikTokers in Pakistan, what are they doing? It's all rubbish. And why is it? Because these are not educated people and they don't need that kind of content. इसीलिए हमारे पास चीज़ें ही वही बनते हैं, trends भी वही बनते हैं जो इसी तरह की चीज़ें ही प्रमोट होती हैं. So I think that goes all back to education and telling people, like making people all again in love with their heritage, with their culture, and with all these good ideas of sustainability. ठीक है, okay. Then I have another question for you, Aqib. In high fashion, the buyers, who are buying like those lehengas and ghararas worth of millions of rupees. Yeah. Is sustainability a concern for them? नहीं, देखिए वो तो एक बहुत ही एक छोटी सी उसकी भी आप देखिए ना कि who is the potential market of that. अभी भी मैं जैसे like I said earlier कि I think पाकिस्तान में हम लोग implement इससे नहीं कर पाते हैं क्योंकि either it's a corporate social responsibility or either it's a PR stunt. मतलब we have seen brands like Sapphire और निशात लिनन doing those packages जो के बाद में एक बीज बन जाता है और उससे एक दरख्त निकल आता है, पर वो सिर्फ एक कलेक्शन तक ही महदूद है. It's only limited to one time use trying to sell your clothes even more. I mean, it does not go beyond the idea of implementing those practices into your brand or anywhere near that. I mean, like from packaging to everything has to be incorporated in a way कि वो चीज़ I mean still sellable रहे, commercial भी रहे. But still, उसमें some, I would say कि being a third world country, Pakistan can start implementing to some level. जिस तरह India has replaced the ink dyeing. Pot dyeing उनसे वो आके ink dyeing के ऊपर आ रहे हैं, which is very sustainable. I mean, dyeing is one of the major contributors to the pollution, environmental pollution. Okay. I would like to add something. I think Zara Shah Jahan is doing this other brand called Jahan, if you've looked at it. So she's collecting vegetable scraps. सुबह सुबह मंडी से लोगों को भिजवा के वो vegetable के scraps लेके आती हैं, and then they dye
अपनी कॉटन जो है वो उन्हीं स्क्रैप्स के साथ. तो आई थिंक आई रियली वांटेड टू मेंशन दैट देयर इज समवन हु इज आल्सो डूइंग दैट in Pakistan as well, and that's very impressive. Jahan, as an ideology, as a brand ideology, is something very impressive. So Yes, because Zara basically okay. sells Yeah. the idea of something very exactly, Indian and Pakistani as well, I would say. I guess so. So I think she's doing her research in that department, and I would also say, like people who have become big, if they can start taking some initiatives, Yes. if they become the trendsetters and if they start implementing those practices, then it would be more easier. Because, and also you have to support the startups, the people who are upcoming, and like even people from Gen Z, just like Pakiza said, this new thing of pre-loved clothes. And like the same, I would like to add the idea of, like these girls using their moms and nannies' dresses for their own weddings. This is also a very nice trend, but where people are using old clothes and the old things to recreate. ठीक है. Brand by the name of Koel, Noorjahan Bilgarami, बिल्कुल the ठीक one है. who has been, who's the like owner of the brand. बिल्कुल सही She's a Karachi-based artist and a textile person. ठीक She has done a lot of. She has actually revived the vegetable dyeing, Okay. and it has brought. They have brought it back on the fashion map. Again, वही बात कि देखें, मार्केट में तो बहुत सी चीज़ें हैं. बिल्कुल ठीक है. हर जगह पे पड़ी हुई हैं. वो Okay. आपका डिसीजन है. जब आप खरीदना बंद कर देंगे तो वो सही. खुद ब खुद कम हो जाएंगी. जिस बिल्कुल तरह ठीक है. ही आपके पास इस वक्त लोगों ने दही खरीदना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक, तो बस लोग खरीदना लग जाए तो दूसरा बंद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. सो ये कोई एक दिन नहीं होगा कि हम सुबह उठेंगे और हम कहेंगे आज हम बंद कर देंगे या आज हम नहीं पहनेंगे. इट इज़ अ वेरी द वे इट हैज़ टेकन अस डेकेड्स टू कम टू दिस पॉइंट. इट इज़ गोइंग टू टेक अस सम टाइम टू गो बैक टू द अदर पॉइंट. और जब तक कोई बहुत, और ये सब चीज़ें, जिस तरह मैं फूड की एग्जांपल देती हूँ, हमने बेहतर खाना शुरू कर दिया बिकॉज ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और जिनको कह रहे हैं कि ये ओबेसिटी है, ये ट्रांस फैट्स है, ये फास्ट फूड है. सो अब नाउ यू बिल्कुल सी ठीक है. दैट वी ट्राई नॉट टू हैव पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड ज़्यादा, या जिनके घरों में कोई फर्स्ट हैंड इंसिडेंट्स हुए हैं. तो वो बीमारियां जो आ रही हैं उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल. बिल्कुल सो नाउ ऐसे दे हैव स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी फूड. इन बिल्कुल द ऐसे. सेम वे ये भी एक प्रोसेस है जो कि आई एम श्योर अवेयरनेस वी नीड टू टॉक अबाउट इट, लाइक forums like these where it has to be highlighted and people needs to be aware that they need to be responsible for whatever they are wearing. Definitely, definitely. I think बिल्कुल one सही. point I would like to add is that as a nation or as a country, if I have talked specifically about Pakistan, it is very deeply rooted. Like we see how we react. India, has successfully managed to sell being Indian. Okay. Indians को देखें, any Indian in the world, even वो अंग्रेजी भी अपनी लहजे में बोलते हैं. This is a great example. You can see a spot on any Indian in the world, and you will tell that he is an Indian. You see any Netflix पे छा गए, you see any of the Netflix series of Indians, बार-बार they have symbols. India का झंडा, गेंदे के फूल का हार. इसी तरह कंजीवरम साड़ियाँ, उनकी सब चीज़ें जो Okay. we have the same crafts as they do. All the block prints and everything which are very sustainable and all, but they are selling it because you would see all the Bollywood stars wearing it. Okay. But on the other hand, I guess this has a lot to do with, then again it comes to being the trendsetters. And like Pakiza said कि अगर लोग दही खरीदते हैं और वो खरीदना शुरू कर देंगे तो लोग तो भेड़ चाल पे ही चलते हैं. But अगर आप ट्रेंड सेट कर देंगे तो लोग उसको फॉलो करते जाएंगे. नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है. सो एज अ लास्ट question that I have for you, do you guys think there are any specific opportunities or venues of collaboration in the industry when we're talking about sustainability and we're talking about looking at the supply chain in a broader context? I'm sorry, could you repeat that? I'm asking, do you think there are any specific opportunities for collaboration industry wide when we're talking about sustainability? अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक कि यही हो सकता है कि जैसे जो स्मॉल स्केल पे जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं उनका सपोर्ट करना आई थिंक बहुत Okay. ज़रूरी है.
जो बिगर इन्वेस्टर्स हैं उनका नोटिस करना कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग योर पीपल. Okay. इट्स अ सर्कल दैट इज़ कमिंग बैक टू योर वर्कर्स एज वेल. ठीक है. जिस तरह अगर आप जिस तरह आई गिव एन एग्जांपल. आई विजिटेड दिस टेंपल कुछ देर पहले Okay. इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स पे. Okay. और वहाँ पे एक पॉन्ड है जो कि इज़ वेरी सेक्रेड फॉर द पीपल हु कम देयर, फॉर द वर्शिपर्स. Okay. लेकिन आसपास की जो क्लोथिंग फैक्ट्रीज हैं उनसे पानी वहाँ आता है और वो उसे ख़राब करे, और वो काफ़ी बार लेटर्स लिख चुके हैं, काफ़ी बार इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर चुके हैं, बट किसी ने आई थिंक इतना ध्यान नहीं दिया है. Okay. सो आई थिंक कि वी रियली नीड टू फोकस. जैसे मैम ने बोला था कि ये Okay. सारी चीज़ें एंड करती हैं लैंडफिल्स के अंदर, आपकी खाने को अफेक्ट कर रही हैं. आप जो आप प्रॉब्ली फिश निकाल के वहाँ से खा रहे हैं वो फिर सारी सही. उन्हीं केमिकल से भरी हुई होती होंगी. सो आई थिंक कि अपॉर्चुनिटीज़ यही हो सकती हैं कोलैबोरेटिव लेवल के ऊपर, कि जो ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली फोकस लें इस चीज़ का कि ये एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन Okay. एंड लुक एट. Okay. Great. Thank you. 1 minute each for you about opportunities. Actually, a few brands like even Fahad and a lot of people are doing and bringing the old back. Old is new. करके. Okay. So these people are, and then you need to understand that हम लोगों को भी जो mass, देखो fashion की भी ना बहुत से genres हैं. There is a industry which is making mass productions. And mass production is something very totally different than when you talk about couture. Couture is हम बहुत नाम लेते हैं. Couture is made to measure. ये फ्रेंच वर्ड है, और couture में आप बनाते थे, और उस वक्त और हम सब couture ही पहनते थे सब कॉन्टिनेंट में, जूतों से लेकर कपड़ों तक. क्योंकि अभी भी couture ही पहनते हैं. जो ख़वातीन दर्जियों के पास जाकर कपड़े बनाती हैं वो couture है. वो एक बंदा उनकी मुताबिक एक चीज़ बना रहा है. मैस प्रोडक्शन इज टी शर्ट्स, समथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन लाखों की तादाद में. बिल्कुल सही. ठीक है ना. सो आपने और जब आप गरारों की बात करते हैं या शरारों की बात करते हैं, वो तो एक ओकेजन में एक दफ़ा पहनना है. जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं, जैसा मैंने तो दोबारा नहीं पहना अपना वो एक ही दफ़ा ही पहना था, और वो ज़िया है पैसे का बहुत ज़्यादा. बट एनीवे वही बात कि ये बहुत एक इंट्रिकेट वोवनली मसाइल हैं which we need to address, and then naturally, and we are working towards it. I think the time khatam ho gaya. I guess, like, I think one of the very local examples that I would like to take is Rasta. I mean, Rasta itna sustainable hone ko itna announce nahi. And like, and they are doing big. Every coming year, they're expanding their business. So I mean, for me, anything which is sustainable and yet commercially viable, that would be like my go-to thing for me, or I would be more inspired. अब रास्ता की स्टोरी में, कैंपेन्स में आप सब चीज़ों को देखेंगे तो रास्ता की सारी चीज़ों में सारा प्रोसेस सस्टेनेबल है. अब I don't know if they're practicing those, all those practices are being done at the industrial level, but you would see all things being hand done. Okay. No, like waste kind of thing, but they are selling it nicely with the right amount of marketing and the right of, they have, I mean, even, I guess, no, except for Papa Don't Preach, no other brand has come up, and even Papa Don't Preach is not very sustainable. So yeah, this is a very Gen Z brand. If we have to take two examples from India and Pakistan, so Papa Don't Preach and Rasta are the two main leaders right now in the Gen Z. And Rasta is very sustainable and it's doing very great. Okay. But I guess in the same way, UN has established an award for the Indian designers who work on sustainability. In the same way, some things should be done on the governmental level or something, where people are being appreciated. पैसे ज़्यादा कमाए ना कमाए, बस कुछ तो मिले ना उन बेचारों को, वरना वो ये ना हो कि आप कुछ, you're not getting anything out of it. बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया. Thank you so much, everyone. Thank you so much for coming in today and giving us insights and talking about sustainability. There is the Lahore-based brand called Cipher. You should definitely check it out. ठीक है. Thank you, everyone. Thank you for coming in.